Assalamualaikum, my YouTube family. I am Dr. Ikra, and in this video we discuss about antihypertensive drugs. Your feedback is so good about hypertension part 1 video, and I am so happy. Do not forget to give your feedback about antihypertensive drugs. That is pharmacology of hypertension. Before starting video, I have to say something. First, you have to like and subscribe my channel so that you can stay updated with my latest videos. And second thing, in this video we discuss briefly about angiotensin converting enzyme inhibitor drugs and angiotensin 2 receptor blocker drugs. So let's begin. What is hypertension? Hypertension is defined as either a sustained systolic blood pressure greater than 140 mm of mercury or a sustained diastolic blood pressure of greater than 90 mm of mercury. Application of antihypertensive drugs. बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए, ड्रग्स को कैसे याद रख सकते हैं, बिकॉज अमूमन यही होता है कि ड्रग्स जो हैं वो भूल जाती हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी ट्रिक्स जो कि आप लोगों के लिए रहेंगी बहुत ही हेल्पफुल ड्रग को याद रखने में एक लंबे अरसे तक। राइट, फर्स्ट, आप लोगों ने जब भी किसी डिजीज की फार्माकोलॉजी करनी है, फॉर एग्जांपल हियर वी डिस्कस अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, लाइक इनकी सबसे पहले आप लोगों ने क्लासिफिकेशन याद रखनी है कि उसके अंदर कितनी ड्रग्स आ रही हैं, उन सब के नाम और कितनी क्लासेस हैं, ये सब आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स की तरफ जाना है जब आप लोगों की ग्रिप अच्छी हो जाए ड्रग्स पे। राइट, सेकंड थिंग, आप लोगों ने ड्रग्स को रिपीट करते रहना है, ठीक है। रेपिटेशन से आप लोगों की ड्रग्स जो हैं उस पे ग्रिप बहुत अच्छी होती जाएगी, ड्रग्स आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेंगी। राइट, सेकंड थिंग होगी रेपिटेशन। थर्ड थिंग जो कि ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है और फनी भी है, लाइक वी यूज निमोनिक्स, लाइक ये मेमोरी ट्रिक्स हैं, लाइक मेमोरी को इन्हांस कर देती हैं, लाइक हेल्पफुल रहेंगी ड्रग्स को याद रखने में एक लंबे अरसे तक। राइट, लाइक हियर वी डिस्कस अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फॉर एग्जांपल वी लाइक हम लोग निमोनिक मिला लेते हैं, ABCDO। A for angiotensin converting enzyme inhibitors, A for angiotensin 2 receptor blockers drug, B for beta blockers, C for calcium channel blockers, D for diuretics or others। इसके अंदर एक और निमोनिक हम लोग बना लेते हैं, VCAR। V for vasodilators, C for centrally acting adrenergic drugs, A for alpha adrenoreceptor blockers, R for renin inhibitors। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के अंदर जो ड्रग आती हैं उनके एंड पे आता है प्रिल। राइट, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स के जो ड्रग्स हैं उनके एंड पे आता है सर्टान, SARTAN। राइट, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो हैं उनके एंड पे आता है OLOL। राइट, ये भी एक मेमोरी ट्रिक थी। सो निमोनिक बन गया फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लाइक ABCDO। O के अंदर आ गया VCAR। What is ACE inhibitors? Angiotensin converting enzyme inhibitors. First line of treatment of hypertension in patient with a variety of compelling indication. Like अगर किसी को hypertension के साथ साथ डायबिटीज है, स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है या क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो ACE इनहिबिटर्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन हो गए। राइट, मैकेनिज्म ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म कंसिस्ट करता है दो पार्ट में। पहले हम फर्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं। राइट, एंजियोटेंसिनोजन दैट इज अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रिकर्सर है जो कि कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में विद द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है थ्रू किडनी।
एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, राइट। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक वेजो कंस्ट्रक्टर है। इंपॉर्टेंट बात इधर ये है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स जो हैं वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देती, इस स्टेप को कर देती हैं ब्लॉक, जिस वजह से रिड्यूस आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, increase vasodilation of vascular smooth muscle, decrease retention of sodium and water, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है रिड्यूस। सेकेंड पार्ट है मैकेनिज्म का। नॉर्मली ब्रेडिकाइनिन जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इंपॉर्टेंट बात इधर ये है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स जो हैं वो इस स्टेप को कर देती हैं ब्लॉक, ब्रेडिकाइनिन की नहीं होती ब्रेकडाउन, जिस वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन का लेवल कर जाता है इंक्रीज। नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन दोनों क्या है, वेजोडाइलेटर्स, राइट। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर ड्रग्स जो हैं वो रिड्यूस कर देती हैं कार्डियक प्रीलोड और कार्डियक आफ्टरलोड, राइट। Application of angiotensin converting enzyme inhibitors. ACEI slow the progression of diabetic nephropathy and albuminuria. They are used as first-line treatment in case of systolic dysfunction, heart failure, hypertensive patient with chronic kidney disease, and in patient with increased risk of coronary artery disease. Due to afferent arterial vasodilation, ACEI have a very beneficial effect on kidney. Pharmacokinetics. All ACEI are orally bioavailable as a drug and a prodrug. Only captopril should be taken on empty stomach because food decreases its absorption, right? Captopril and lisinopril might be preferred in patients with severe hepatic impairment because they undergo hepatic conversion to active metabolite. Lisinopril do not require dose adjustment in renal impaired patient because it's not primarily eliminated by the kidney. Only enalapril available as IV. Adverse effect of angiotensin converting enzyme inhibitors. Dry cough, mainly due to increased level of bradykinin. Rash, fever, hypertension, hyperkalemia, angioedema, renal insufficiency. Contraindicated during pregnancy. Angiotensin 2 receptor blockers. Angiotensin 2 receptor blockers block the AT1 known as angiotensin 2 type 1 receptors, therefore decreasing the activity of AT1 receptors by angiotensin 2. Angiotensin 2 type 1 receptors location, that is heart, kidney, blood vessels, CNS. ARBs do not increase bradykinin level. Mechanism of angiotensin 2 receptor blockers. Angiotensinogen, जो कि अल्फा 2 globulin precursor है, secreted through liver. Angiotensinogen convert हो जाता है angiotensin 1 में with the help of enzyme that is renin, secreted through the kidney. Angiotensin 1 convert हो जाता है angiotensin 2 में with the help of angiotensin converting enzyme. Important बात इधर ये है कि जो angiotensin 2 receptor blocker drugs जो हैं वो ब्लॉक कर देती है एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर को, जिस वजह से वैसोडाइलेशन इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, रिड्यूस एल्डोस्टेरोन इफेक्ट, डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जिस वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 receptor blockers. They may be used as first line of agent in hypertension treatment and in patient compelling indications of diabetes, heart failure, or chronic kidney disease. ARBs and ACEI have similar action
but their therapeutic effects are not same. Pharmacokinetics of angiotensin 2 receptor blockers. All ARBs are orally active and are dosed once daily, except valsartan, which is given twice a day. They are plasma protein bound drug except candesartan, having large VD, that is volume of distribution. Losartan, which undergoes first pass hepatic metabolism, including conversion to its active metabolites, while others have inactive metabolites, elimination through urine and feces. Reverse effect of angiotensin 2 receptor blockers: hypotension, hyperkalemia, rash, fever. They are contraindicated during pregnancy.